Students, we are on present perfect tense. Now let's define present perfect tense. That present perfect tense is used to express an action that occurred or completed at some point in past. This tense expresses an idea of completion or occurrence of an action in past without giving an idea about the exact time of occurrence. Though the time of action is not exactly known, this tense is mostly used to refer to actions completed in recent past, not a very long time ago. So student, simple अल्फाज में present perfect tense उस action के लिए यूज किया जाता है जो recent past में complete हो चुका हो. फॉर एग्जाम्पल, आप स्कूल में अक्सर एक टर्म यूज करते हैं. जब टीचर आपको कोई काम देता है तो आप जब कर लेते हैं तो बच्चे हमेशा कहते हैं, मैम आई हैव डन माई वर्क, सर आई हैव डन माई वर्क. तो ये वो एक्शन है जो बच्चे ने अभी अभी कंप्लीट कर लिया गया. एट द टाइम ऑफ हिज स्पीकिंग वो एक्शन कंटिन्यू नहीं है, वो कंप्लीट हो चुका है. दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. अब इसके स्ट्रक्चर की तरफ आए तो स्ट्रक्चर में सबसे पहले मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी. मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी एंड देन ऑक्सिलरी वर्ब विल बी हैज एंड हैव. हैज और हैव हमारे पास यहां पे ऑक्सिलरी वर्ब यानी कि हेल्पिंग वर्ब्स हैं. Student, keep this thing in mind that if the subject of the sentence is he, she or it or any singular noun, अगर सब्जेक्ट ही, शी, इट या कोई भी सिंगुलर नाउन यानी कि हमजा, अदनान, आयशा, कोई भी सिंगुलर नाउन है तो उसके साथ हम हैज यूज करेंगे. If the subject of the sentence is I, we, you, they or plural noun, अगर subject I है, we है, you है, they है या कोई भी plural noun है यानी कि boys, girls ये सारे plural noun हैं तो इनके साथ हमेशा हम have use करेंगे. Helping verb have use होगा. Now coming towards the structure of positive sentences, structure में subject के साथ has या have. ये हैज या हैव डिपेंड करता है कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल यानी थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट. लेट्स सी दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम एग्जांपल. फर्स्ट एग्जांपल इज आई हैव ईटन माय मील. नाउ हियर सब्जेक्ट इज आई है तो उसके साथ हम लोगों ने हैव हेल्पिंग वर्ब लगाया है. ईटन इज द थर्ड फॉर्म ऑफ ईट. माय मील इज ऑब्जेक्ट. देन वी हैव शी हैज गिवन मी हर बुक्स. I have finished my all tasks. They have helped us. He has gone to home. In all of these sentences, you can easily see that main verb, यानी कि जो main verb है present perfect tense का, वो third form of the verb है. उसके साथ auxiliary verb has या have use किए गए. Coming towards a negative sentence, student, negative sentences को बनाने के लिए structure कुछ यूं होगा. Subject के साथ plus have और has plus not plus past participle and then we have object is there. Coming towards the example of this structure, you have not completed your work. In this sentence, you is subject, have is the helping verb, not is basically negation. So keep in mind कि negative बनाने के लिए has, have के साथ not is compulsory. They have not called us. She has not come. I have not gone to America. All of these sentences belong to negative sentence of present perfect tense. Now coming towards the last, that is interrogative यानी कि question sentences. Question sentences को बनाने के लिए हम ये structure follow करेंगे. Has, have क्योंकि helping verb है, इनको sentence के start में लेके आया जाएगा. Has, have plus subject plus past participle plus object. For example, has she brought her camera? He has. Have they played a game? Have I sent you a mail? All of these sentences referring towards the interrogative sentence of present perfect tense. So student, this was all from present perfect tense. Now let's move towards the last tense of present tense, that is present perfect continuous.